Welcome aspirants, welcome to SRIRAM IAS YT channel in this one PYQ a day series where we discuss one previous year question of UPSC Civil Services Examination Mains. So today is the turn of geography and that is why I'm here to talk about one PYQ of geography which appeared in year 2023. So GS paper 1 2023 question we will see. The question that they have asked is very simple and theoretical in nature. And the question is, how are the fjords formed? Why do they constitute some of the most picturesque areas of the world? 10 marks, 150 words. What is the first thumb rule of mains answer writing? Read the question carefully. Here, there is not much to read because this is very straightforward question. And if you don't know what fjords are, obviously you cannot answer it. And if you have even some sort of inkling, it is very easy afterwards to write the second part. लेकिन ये क्वेश्चन जो है 10 मार्क का है, दो इसमें पार्ट्स है, तो जनरली 5 marks each generally they award. So that is why it's very important to read the geomorphic processes and the landforms, variety of landforms created by either the rivers and the streams या फिर glaciers. So fjords are nothing but deep. हम स्टार्ट करेंगे अपना आंसर और इंट्रोडक्शन से वी विल सिंपली जंप इनटू आवर क्वेश्चन बिकॉज दिस इज ए लॉन्ग क्वेश्चन 150 वर्ड्स में अगर हमें लिखना है और जनरली अगर 2 से 3 पार्ट्स में क्वेश्चन आते हैं 150 वर्ड्स वाले तो यू शुड ट्राई एज फार एज पॉसिबल टू डायरेक्टली जंप इनटू द क्वेश्चन फ्रॉम इंट्रोडक्शन इटसेल्फ. तो हम बात करेंगे fjords की. व्हाट आर दे? दीज आर लॉन्ग, नैरो एंड डीप valleys. These are long, narrow and deep valleys created because of the geomorphic process like glacial erosion. ये एक erosional landform है. ये एक erosional landform है जो कि glaciers create करते हैं. ये erosional landform है जो glacial नेचर का है, मतलब ग्लेशियर्स क्रिएट करते हैं. इन द आइस एज द रिवर्स फॉर्म द V-shaped valley. V-shaped valley, the rivers formed it, and afterwards during the ice age the glaciers eroded this very V-shaped valley and converted it themselves into the U-shaped valley. ये U-shaped valley में glaciers ने river valleys को convert किया and it was below at that point of time the sea level was not that high. ice age की हम बात कर रहे हैं, हजारों साल इसमें हो चुके हैं. there are many thousands years which have passed by and now what we see that the sea level is such that the water has intruded into these U-shaped valleys जिन्हें हम बोलते हैं fjords. क्वेश्चन जो पूछा गया, how are the fjords formed? This is how they form. During the ice age, the V-shaped valleys created by the rivers got converted into the U-shaped valleys by the glacial erosion process. तो ये एक इरोशनल लैंडफॉर्म है fjord. इस तरीके से हमने इसको इंट्रोड्यूस किया. द वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वी हैव एड्रेस्ड. जो वन हाफ है वो एड्रेस यहां पे हो जाता है. जैसे ही हम इसको कंप्लीट करेंगे, बाय दैट टाइम 150 वर्ड्स में you might have spent around 50 to 70 words. Yes, 5 to 6 lines में इसका जो इंट्रोडक्शन है, how they are formed, you will explain. सिंपलिस्टिक तरीके से एक्सप्लेन करना, स्ट्रक्चरल वे में एक्सप्लेन करना ताकि जो एग्जामिनर है उसको दिखाई दे जाए क्लियरली दैट यू हैव रिटन in a organized manner. Now the second part. Why do they constitute some of the most picturesque areas of the world? They look very beautiful, very pristine, very natural. Why they are asking? Why they constitute one of the most picturesque areas of the world? तो primarily जो चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए, primarily जो aesthetics का aspect यहाँ निकल के आता है. Because these are very deep valleys, walls, mountain walls are surrounding them. So they look very beautiful. The reflection of the mountains and the sky on the blue water और कंट्रास्ट जो निकल के आता है कि एक साइड ब्लू वाटर है कंप्लीटली और एक तरफ माउंटेन्स हैं. ये जो कंट्रास्ट है, ये जो एस्थेटिक्स हैं, इसके बारे में हम यहां बात करेंगे. दैट इज व्हाई दे आर वेरी पिक्चर्स्क. They are also very important and picturesque because of what?
the biodiversity present there. बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। अब फ्योर्ड से मोस्टली कहाँ फॉर्म होते हैं जब हम इंट्रोडक्शन हमने दिया उसके बारे में बताया, तो एग्जाम्पल भी वहां पे साइट करना है। जैसे चिली में, कंट्री इन लैटिन अमेरिका, अलास्का, अमेरिकन स्टेट विच इज इन नॉर्थ अमेरिका, यू हैव न्यूजीलैंड, यू हैव नॉर्वे, दीज आर द एरियाज जहां पे ये मिलते हैं हमें फ्योर्ड्स। इंडिया में नहीं मिलते, क्यों? बिकॉज हिमालयाज वेयर द ग्लेशियर्स आर, दे आर नेवर और नॉट नियर एनी ओशन, दैट इज वाई वहां फ्योर्ड्स नहीं मिलते। जहां पे ओशन और ये यू शेप्ड वैली मिलती हैं आपस में, ताकि उसमें पानी भर जाता है, सी वाटर इंट्रूजन होता है, वहां पे फ्योर्ड्स बनते हैं। तो एज यू कैन अंडरस्टैंड ज्योग्राफी से, और ऐसे एरियाज में बायोडाइवर्सिटी बहुत ही क्रूशल हो जाती है, चाहे वो फ्लोरा हो या फौना हो। ऑटर्स हो गए, सील्स हो गए, हार्बर सील्स पर्टिकुलरली, दे आर वेरी वेरी डोमिनेंट इन दीज एरियाज। प्लस ऐसे एरियाज व्हेन देयर इज अ ब्यूटी, देयर विल बी पीपल, तो रिक्रिएशनल और टूरिज्म नीड्स यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो रिक्रिएशनल और टूरिज्म नीड्स की वजह से भी people go for cacking here, people go for hiking, people go for fishing, people go for vacation, इको टूरिज्म, ये काफी डोमिनेंट है इन एरियाज में। तो रिक्रिएशनल और जो टूरिज्म नीड्स हैं, दैट दे बेसिकली टेल्स यू कि इतने ज्यादा ये पिक्चर्स क्यों होते हैं। और मोस्टली ये अनटच्ड होते हैं, क्योंकि डिस्टेंट एरियाज में होते हैं, रिमोट लोकेशंस में होते हैं, तो इन्वायरमेंटली सोशली दे आर नॉट दैट मच ऑफ टच्ड बाय द ह्यूमन हैंड, एंड दैट इज वाई वो आज भी उनकी जो ब्यूटी है, जो उनकी ओरिजिनलिटी है, वो इंटैक्ट है। तो प्राइमरली बिकॉज ऑफ द environmental and biodiversity point of view, they are in a way, even now, despite of the fact that climate change has taken place, anthropogenic transformation of the ecosystems are undergoing, उसके बाद भी they are still very very relevant from environmental point of view. So pictures क्यों इसीलिए ये एरिया होते हैं। तो इनकी जो ज्योग्राफी है, ये जो टोपोग्राफी है, वहां पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं, मोस्टली जैसे मैंने बताया कि नियर टेम्परेट जोन्स में है, पोलर जोन्स के पास ही मिलते हैं, तो वहाँ पे ऐसी कंडीशंस भी होती हैं। बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रिक्रिएशनल और टूरिज्म की नीड्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, यू कैन साइट द एग्जांपल्स ऑफ सम fjords like in Norway, not like in Alaska. They are very very famous worldwide. UNESCO World Heritage Sites भी हैं इनमें से कुछ। So that is why they are very picturesque. The moment you will complete the second part, you will be around 140 words, 130 to 140 words, because यहाँ पे लगभग 6 से 7 लाइन लग जाएंगे। I am always very particular about the word limit, because UPSC is very particular about the word limit. There is a penalty if you breach the word limit. That is why it's very important that within the word limit you are writing your answer. Don't write too much. Just write what they are asking in an organized and structured way and substantiate your points. You will get the marks. तो यहाँ पे ये हो रहा है, क्लियर है? Now you will write the conclusion. The threats which are coming from climate change, threats which are coming from sea level rise, threats which are coming from anthropogenic actions, they require intensified efforts by the human community in sustaining and protecting this natural landscape that is called fjords. इस तरीके से हमको एक कंक्लूजन फ्यूचर ओरिएंटेड एक लिख देना, लास्ट का सेंटेंस से बनेगा, एंड योर आंसर इज कंप्लीट। नाउ द एग्जामिनर नोज दैट यू नो what fjords are, how they are formed, you are substantiated by giving examples, and you understand why they are one of the most picturesque areas of the world. This is how you approach and write मेंस आंसर्स। ये 10 मार्कर था, तो 150 वर्ड्स 14 से 15 लाइन होती हैं, विद इन दोज लाइन्स हमें लिखना है। तो 2 पेजेस अलॉट होते हैं, तो 1.5 पेजेस बाय एंड लार्ज, इफ यू आर राइटिंग 8 to 9 वर्ड्स ए सेंटेंस एक लाइन के अंदर, काम हो जाएगा। क्लियर है? ओके, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन माई टेलीग्राम channel to remain in connect. I'll meet you again.